न्यूयॉर्क सिटी के मेयर एरिक एडम्स ने न्यूयॉर्क सिटी कौंसिल की जानब से मंजूर करदा इंट्रो 586 दी हाउ मैनी स्टॉप एक्ट बिल को वीटो कर दिया है। इस बिल में न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट से ये तकाजा किया गया था कि न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट और पुलिस ऑफिसर्स अपनी जॉब के दौरान जितने भी इंटरेक्शंस करें, किसी भी शहरी को वो रोकते हैं, उनसे कोई पूछ कुछ करते हैं, कोई भी आम मामूली नौयत के भी जो सवाल करते हैं, उन तमाम को दस्तावेजी शक्ल दें और अपना पेपर वर्क मुकम्मल करें। मेयर एरिक एडम्स का ये कहना था कि न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट की शफाफियत और एहतसाब का निज़ाम पहले से मौजूद है और इस नए बिल में जो तकाजे हैं अगर उन पर अमल दरामद किया जाएगा तो न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स हैं वो कानून पर अमल दरामद को यकीनी बनाने की बजाय पेपर वर्क की तरफ उनकी तवज्जो ज़्यादा मरकूज़ हो जाएगी। लिहाजा मेयर ने आज एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बिल को वीटो करते हुए मुस्तरद कर दिया। आज सिटी कौंसिल में जब मेयर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिल को वीटो करने का ऐलान किया तो उनके साथ न्यूयॉर्क के पुलिस कमिश्नर के बाद न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट के चीफ ऑफ डिपार्टमेंट जेफ मैड्री समेत न्यूयॉर्क पुलिस एंड डिटेक्टिव बेनेवलेंट एसोसिएशन के कायदीन समेत दीगर कम्युनिटी कायदीन बड़ी तादाद में मौजूद थे। इस मौके पर मेयर एडम्स का कहना था कि वो ख़ुद भी एक पुलिस ऑफिसर रहे हैं और वो पुलिस के निज़ाम और शहरियों की खिदमात के हवाले से जो तकाज़े हैं उनको बड़े बतरीके एहसन समझते भी हैं और उन पर यकीन भी रखते हैं। उनका ये कहना था कि वो नहीं समझते कि बिल की कोई जो इंटेंशन थी वो गलत हो सकती, लेकिन बिल की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसकी वजह से पुलिस डिपार्टमेंट के लिए अब जो पहले ही अपने काम का दबाव ज़्यादा है उनके लिए काम करना मज़ीद मुश्किल हो जाएगा। मेयर का जो बिल को वीटो के ऐलान के बाद कुछ ये कहना था। Vetoing this legislation. I want to be clear. It's not about holding police officers accountable. It's about making sure we do not prevent them from doing their job and continue what we have done so many times. Yesterday, we talked about how important it is to remove dangerous people off our streets. This bill will impact that in a real way. Police work is difficult work. It's hard and challenging work. We saw two officers shot the other day. As they entered the building, they're asking individuals, did you see anything, did you hear anything? Each one of those persons that they stop on their way into the building, they have to pause to gather the information, who they are, with their gender, what their ethnicity, why did they stop them? Because remember, you're not just keeping all this in your head. If you stop 20 people on your way to responding to a job, you have to document those 20 people. Did you see someone flee the scene? Did you hear anything? What were they wearing? Now you have to pause at each one of those individuals, write down in your memo book or document on the app that the interaction you had before you go to resolve the job. And so some would say, well, why don't they just do it at the end of the job? Then they're violating the rules because they didn't remember everyone they spoke with, and if that body camera is not synced to everyone they spoke with, and they didn't document it, now those officers are open for potentially departmental charges because they didn't properly follow the rules. मेयर के वीटो के ऐलान के बाद न्यूयॉर्क के पुलिस कमिश्नर के बाद न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट के चीफ ऑफ डिपार्टमेंट जेफ मैड्री समेत पुलिस एसोसिएशन के कायदीन और दीगर अहम शख्सियात की जानब से मेयर को वीटो के इक़दाम की हम Members of the community, we are here today to make a very simple, straightforward point. Effective policing is completely dependent on positive community engagement. Every single day, the men and women of the NYPD interact with people they serve in countless ways. And whether it's response to a 911 call, asking for information as an officer is out on patrol, searching for a missing person, or knocking on doors to ask if anyone has seen a suspect. Each one of these interactions is based on a certain level of trust. And at the end of the day, that's what we're talking about here today. Above all else, New Yorkers need a police department that is 100% focused on keeping them safe. That's the job we were sworn to do. Witnesses and suspects, sometimes it's just about providing people with help. If I ask someone, if I see someone who
looks ill, or maybe they look despondent, and I asked them, can I help you? I just created a bill, I created a piece of paper, when all my intentions were was to make sure that that person was safe, and if they needed some help, and if they said, no, I don't need any help, you know, they'll go about their way. I have to do a piece of paper. If I do have to give them some help, I have to write a piece of paper. We don't need to create any more work for these officers, for the women and men who are out here every day, risking their lives, keeping this city safe, who want to build bridges with this community and connect with community. At the end of the day, this isn't about politics. This is about public safety. That's a fact. We want every New Yorker to understand how hard your police officers are working every single day, helping your community, all of us together, making it a safer community. And if New York City detectives can't do their job effectively and investigate these shootings, these high-impact crimes that are happening throughout the city of New York and are going to be tied up with paperwork, it's going to be counterproductive to the safety of the people of this city. इन हुकाम का ये कहना था कि पुलिस डिपार्टमेंट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के अपने फ़र्ज़ पर फोकस करना चाहता है। मेयर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ़ कम्यूनिटीज़ और इमिग्रेंट कम्यूनिटीज़ के अहम कायदीन के साथ साथ पाकिस्तानी अमेरिकन कम्यूनिटी के अहम कायदीन भी मौजूद थे और इन कायदीन की जानब से भी मेयर के बिल को वीटो करने के इक़दाम की सपोर्ट की गई। हम मेयर को बहुत सपोर्ट करते हैं इस वजह से क्योंकि हमारी कम्युनिटी के साथ हर वक्त क्राइम्स होते हैं और हमें ज़रूरत है कि पुलिस हमारे मोहल्ले में आए बग़ैर के डेस्क में बैठ के पेपर वर्क करें। जो इंटू 586 है, आई एग्री विद द मेयर, क्योंकि जो लेवल 1 ऑफेंस है इट्स वेरी वेरी हार्ड एंड इज़ मैनेजरियल फॉर NYPD। लेकिन NYPD का काम है प्रोटेक्ट एंड सर्व द कम्युनिटी, और हमारी जो भी कम्युनिटी ओवरऑल एज अ मुस्लिम और पाकिस्तानी हम वला को फॉलो करते हैं। सो जो ये इंटरनल ने बिल पास किया है इस विल ऐड अनदर लेयर, क्योंकि ऑलरेडी जो ऑलमोस्ट 70-80% जो NYPD का काम है इज़ मैनेजरियल स्टफ। आई मीन जो क्राइम होता है फिर उसको पेपर वर्क इतना ज़्यादा है दैट यू नो दे मुच मोर मेजर। ये जो बिल है इट ऐड अनदर लेयर। तो इसमें ये होगा कि जो काप्स हैं दे हैव टू इवन किसी से बात करने के लिए दे हैव टू रिपोर्ट एवरीथिंग। आज हम सिटी हॉल में इकट्ठे हुए हैं और जो मेयर ने अभी जो पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में जो मेयर के मौक़िफ़ है ना वो बिल्कुल सही, हम उसको सपोर्ट करते हैं क्योंकि पुलिस को पहले मौके पे पहुंचना चाहिए और अपना काम करना चाहिए, उसके बाद पेपर वर्क होना चाहिए। जो अभी जानी कि उन पे इतना बोझ नहीं होना चाहिए, पहले उनको सही काम करना चाहिए, उसके बाद हम मेयर की इस बात पे सपोर्ट करते हैं। मेयर एरिक एडम्स की जानब से बिल को वीटो करने के ऐलान से कबल न्यूयॉर्क सिटी हॉल के सामने मुख्तलिफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस की नुमाइंदा तंजीमों, कायदीन और अरकान की बड़ी तादाद जमा हुई और उनका भी ये कहना था कि बिल का जो मकसद है वो पेपर वर्क के तकाजे को बढ़ाने के जहाँ बढ़ाएगा वहाँ पर न्यूयॉर्क पुलिस की जो कारकर्दगी है उसमें एक कमी होने का अंदेशा है, लिहाजा वो मेयर से मुतालबा किया उन्होंने कि वो इस बिल को वीटो कर दें। मेयर एरिक एडम्स की जानब से बिल को वीटो करने के बाद अब देखना ये होगा कि न्यूयॉर्क सिटी काउंसिल की जानब से इस बिल को ओवरराइड किया जाता है या नहीं। और मेयर से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि अगर उनके वीटो को ओवरराइड कर दिया गया और ये बिल एक कानून की शक्ल इख्तियार कर गया तो फिर उनका क्या लाहे अमल होगा, तो मेयर का ये कहना था कि वो कानून पर यकीन रखने वाले शख्स हैं और उन्होंने हमेशा कानून की पासदारी की है और कोई भी मुस्तकबिल में ऐसा मरहला आता है जहाँ पे कानून की पासदारी का तकाजा आया तो उस तकाजे को पूरा करेंगे। मोहसिन ज़हीर, न्यूयॉर्क सिटी हॉल, न्यूयॉर्क। Don't forget to like, comment and subscribe.